Hey guys, welcome back to my channel. Welcome to another episode of haul video, but this video is going to be a makeup, skincare, body care, hair care haul which I have got from Nykaa. This is not sponsored video. I have been purchasing these products from last 2 months. I have not purchased in one go, and most of the products I have bought because I wanted to review couple of products. Some of them are like new launch, some I wanted to restock, and I will be talking a brief about these products. If you want to know that how these products work, I have already uploaded a lot of shorts on these products. Most of the products I have already reviewed, but couple of them are still pending and I will be uploading them soon. Please be patient with me. I am always in time crunch. But in this video, I just wanted to collate all of these products what I have purchased in last 2 months, and I will be updating all the links in the description box below. So if you want to try any of these products, or if you want to just get your hands on these products, you can get all the links in one particular video, and that's how I have been doing. So yeah, if you want to know what I have got from Nykaa, then please keep on watching. But before moving ahead, if you're new to my channel, hi, my name is Mandira. I do create videos about lifestyle, beauty, makeup, fashion, and sometimes vlogs. So if that is sort of your thing, then please continue watching and do take a moment to subscribe to my channel. That would mean a lot to me. And with that, let's just get into the video. Okay, let me first start with body care and skincare products. I do not have too many of them. Let's just start with that. Body care, skincare, and hair care. The first one is this one. This is a body lotion I have got. I think this is the new launch. That's why I wanted to get my hands on this one. Normally, I don't use Vaseline ka body lotion. It's their Healthy Bright Sun Protect SPF 30 UVA UVB protection plus PA+++ सीरम इन लोशन. इसमें आपको 400 ml का प्रोडक्ट्स मिलेगा. दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स. या इसका जो कंसिस्टेंसी है, इट सीम्स थिक बट बहुत लाइट वेट है. एक माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है which is not too strong or bothering. I don't like that much strong fragrance in any of my skincare products or body care products. Body care products में फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, बट इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज्यादा माइल्ड है. एंड इसका जो कंसिस्टेंसी है, एक बार दिखा देती हूँ आपको. ऐसा कंसिस्टेंसी है, एंड द मोमेंट यू रब ऑन योर स्किन, it immediately just dissolve. So I use it every day. I'm just trying, and recently I got it, so I quite like the product. And yeah, that's about this one. Next product what I have got, this is the hair serum. This is from Tresemme Keratin Smooth with Argan Oil Anti-Freeze Hair Serum. Up to 2 times smoother hair. 100 ml of products आपको मिलेगा. इसका कॉस्ट है 495. It went quite viral, and actually मुझे सीरम लेना था. मेरा हेयर सीरम सारा खत्म हो गया था, so I was like thinking which one to get. Then I thought like let's try this new one. This launched couple of weeks ago, I think, and I have seen a lot of YouTubers. They were also promoting this one, and it really worth the hype. इसका जो consistency है, of course सीरम जैसा ही है, but the moment if you have baby hair और थोड़ा बहुत सेट करना है, या फिर आप अगर जिस दिन आप हेयर वॉश कर रहे हो उस दिन बाल पूरी तरीके से सेट नहीं होता है, राइट? सो ये आप ना थोड़ा सा ऑयल जैसा भी काम करता है, बट योर हेयर विल नॉट बी स्टिकी और चिपचिपा टाइप का, ऐसा नहीं होगा, बट तुरंत वो सेट कर देगा. इफ यू वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्लीक bun or sleek hairstyle, you can also use this. Just need a drop of this serum and it dissolves like this. I am really liking this one, and I can understand why people are talking about it. I would highly recommend this one. If you also are looking for some good hair serum, I would definitely want you to try this one because I really love this one. And next product what I have got, this is not a new launch, but also I just wanted to try face oil because I do sometimes face massage, so for that also I need
some kind of face oil. So this one I got, this is from Nykaa, it's their home brand. Nykaa Skin Potion 24 Gold Facial Oil. This one also I got it on discount. This oil is amazing, but I will not suggest anyone who has oily skin avoid using facial oil. I have dry skin, so that's why I like using facial oil a little bit before going to bed or in morning or whenever I feel like, and it's really lightweight. I loved it. So this is the first one. Second one, this is a primer oil. Actually, this is from Rene, and I have used this one and one of their face glow. I love both of these products. I almost finished it. यहाँ तक ही दिख रहा है. This is basically, as I mentioned, primer oil है. Rene Glass Glow Pre Makeup Oil. Prep and glow all day. I will not suggest anyone who is having a oily skin. This is basically for dry skin people. So you can mix it with your foundation or before applying any makeup. You can definitely try this one. I love this facial oil. Rene is a brand. I think I have tried so many products from them, and I think this brand is little underrated. And yeah, that is about the skincare. Yeah, one more product is there, sorry. This is the product which I have got because I wanted to try it, and this was a new brand, and this is a Indian celebrity own brand, our own Kriti Sanon. उनका brand है ये. Hyphen Golden Hour Glow Serum, kakadu plum, hyaluronic acid, alpha arbutin, niacinamide है. All skin types के लिए है. 30 ml of products आपको मिलेगा और इसका प्राइस है 649. This one also I have almost finished it. I love the texture. इसका जो texture है ना, it's not too watery, not too oily. Mid में एक अजीब सा एक texture है. I can't put it in word. The moment you just pump 1 or 2 drop and you just put it on your skin feels soft and plumpy. I really loved it. I have been using it from the day I have purchased. I think itna bacha hai. If you want to try, you can go for this one. This is also for all skin types, by the way. मैंने बोला शायद, right? Okay. Now let's move on to eye products. I have got so many mascaras, and I think all of them I have already reviewed. Yeah, all of them I have reviewed in my shorts. So if you want to know the details, please watch my shorts. I'll just quickly show you what are the mascaras I have got. This one, this is so cute bottle. I mean, the packaging is quite cute. Wine bottle type का है. This is from Tipsy Beauty. It's their Drink and Blink mascara, lengthening mascara. इसका और एक भी आता है. I think that one is curling. And I think 2 more mascaras they have. Curling वाला एक है और एक शायद volumizing वाला है. मुझे याद नहीं है, but एक और mascara तो है. Okay, I got the lengthening one because I love long lashes. So that's why I got this one. इसका भी price कुछ 700 और 800 के आसपास है. The first one. Second mascara is this one, and I never used any of the products from this brand. This brand is called Matte Look False Lash Mascara. And I don't remember the price, but I will add all the links in the description box below, so check them out. All of these mascaras are under 1000 rupees only, and I really don't specifically remember all the prices, so please do check the link. Okay, that is the second mascara from Matte Look. Third mascara is this one. I freaking love this mascara. Okay, this is a new brand, and I already had collaborated with this brand for their lipstick. I love their lipstick as well. This is a brand called Stays 929, and it's their All Eyes on You volumizing waterproof mascara. 12 hour तक ये रहता है. इसका भी प्राइस कुछ around 600-700 है. I really don't remember. And oh my god, this mascara, guys, you have to use it. And the best part is, ये mascara waterproof तो है. I'm sure if you guys have used waterproof mascara, लगा तो लोगे आप. While removing it, it's a task, okay? And ये जो mascara है ना, आप थोड़ा सा आपके face पे पानी डाल दो, and you just rub your finger, as in like just put your finger like this and do like this, and
all the mascaras will come out. Okay, softly you have to just do it. It's so easy to remove. That's the best part of this mascara. Fourth mascara is this one. This is from Swiss Beauty Craze Duo mascara. इस mascara में ऐसे दोनों साइड में आता है, जैसे हुडा ब्यूटी का मस्कारा है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम टाइप ऑफ डिजाइन वाइज सेम है. इस साइड में ये लेंथनिंग वाला है एंड दिस साइड इज फॉर वॉल्यूमनाइजिंग. तो डुअल मस्कारा है. दिस मस्कारा इज ऑल्सो अमेजिंग. ऑल दीज मस्काराज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू. इफ यू लाइक मस्कारा, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मस्कारा अंडर बजट, you can try any of these. And the next mascara is from Mars. ये mascara, I mean the packaging and everything, it's very affordable also. 200 और 250 के आसपास इसका प्राइस है. One thing I did not like, now I mean it works absolutely perfect, okay, but the thing is ये ना बहुत जल्दी dry हो रहा है. I don't know why. ओनली ये मस्कारा में ही है प्रॉब्लम या फिर इनका ये जो पर्टिकुलर रेंज है उसमें ये प्रॉब्लम है. आई डोंट नो. इफ यू हैव यूज्ड दिस मस्कारा एंड दिस इज द सेम केस विथ you as well, please do let me know in the comment section. It functions really well. I love the applicator and everything, but बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है, which is टिल बमा. ये अभी हो रहा है, मतलब जब मैंने खरीदा था तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बट overall it's a good mascara. And the last mascara, which is a new launch from L'Oreal Paris, it's their Panorama mascara, voluminous, waterproof, hydrofuge mascara. This mascara, oh my god, this is like my dream mascara. I mean, I have been using it from the day I have got my hands on this mascara, and this mascara does the same thing what they claim. I love my lashes to look long, luscious, and curl, volume, everything. I love lashes. I love good lashes. Okay, तो ये मस्कारा जो काम करता है ना, oh my god, first coat में you will see the result. If you are a girl who don't know which mascara will work for you, I would recommend you try this one. This is almost 1000 rupees, like 999 इसका प्राइस है. इसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह नहीं है, बट आई हैड टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस वन. रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ था ये, तो अमेजिंग मस्कारा. दिस इज द लास्ट मस्कारा. सो टोटल these many mascaras I have got in this particular haul. Let's quickly move on to some lip products. So the first lipstick I have got from Inside Cosmetics. It's their matte lip serum. I think it was also a new launch when I purchased it a month ago. I think avocado and vitamin E. This is the shade. I'm in the shade 10 7 rings. I'll quickly show you the swatch here. It will look amazing on any Indian skin tones. It's a beautiful pink, mauvey, little bit of brownish undertone का shade है, and it's smudge proof, but it takes little bit longer to dry it completely. This is the first one. Second one, I got this baby lips from Maybelline. Nowadays I'm using different lip balms, but I used to love this Maybelline का baby lips. इसका जो शेड नेम है वो Maybelline न्यूयॉर्क NYC, ओके, न्यूयॉर्क सिटी ये है. इसका जो शेड है ना, ये मुझे बहुत प्रिटी लगता था. इट्स कोरल पीची कलर है, ये ऐसा शेड आता है इसका. अचानक से ये दिखा एंड इट जस्ट रिमाइंडेड मी दोज डेज, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अराउंड आई थिंक 2014 और 2015 की बात कर रही हूँ, अराउंड 2015 की बात कर रही हूँ. दैट टाइम आई यूज्ड टू यूज दिस, सो आई गॉट दिस Maybelline lip balm again. Next lipstick is this one. This is from Rene Cosmetics. I'm in the shade Francesca. ये ऐसा है इसका जो लुक है, and this looks similar to little bit of Fenty Beauty का जो लिपस्टिक आता है, राइट? तो उसके जैसा इसका थोड़ा सा डिजाइन किया हुआ है. ये इसका शेड जो है ऐसा है. आई थिंक दिस शेड एक्चुअली जब मैंने लिया था ना, फोटो में अलग दिख रहा था, बट वेन आई गॉट इट इट्स लिटिल बिट इन मोर रेड. तो मैं एवरीडे बेसिस पे नहीं लगा सकती हूँ. एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गेट दिस
फॉर माई ऑफिस पर्पज, बट रेड लगा कि आई डोंट वांट टू गो टू माई ऑफिस. बट ये लिपस्टिक अच्छा है. आई वुड से इट डज नॉट स्मज एट ऑल. दिस इज स्मज प्रूफ लिपस्टिक एज वेल. ऑलरेडी अपलोडेड आर शॉर्ट्स विद डिटेल्ड रिव्यू, सो इफ यू वांना check that out, please go ahead. Next जो है is this one. This is Nykaa का न्यू लॉन्च है. होम ब्रांड, उनका जो होम ब्रांड है उनका लॉन्च है. Nykaa लिप ग्लेज. इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है. आई गॉट द शेड जेली एंड जैम. एंड इसका जो टेक्सचर है ना, पे दिखाती हूँ, बहुत लाइट वेट है. इसका जो टेक्सचर एकदम माइल्ड बेबी पिंक कलर का आता है. लिप्स में आप लगाओगे तो उतना ज्यादा कलर नहीं आता है अनलेस यू आर अप्लाइंग इट विथ अ लिप लाइनर. हाइड्रेटिंग है डेफिनेटली, बट बहुत जल्दी ना ये निकल जाता है. यू हैव टू री अप्लाई इट कंटिन्यूअसली विद इन एन आवर. तो दैट इज द वन थिंग. आई डोंट नो ये मेरे साथ सिर्फ होता है या फिर प्रोडक्ट ही ऐसा है, बट आई वुड नॉट से कि इट्स अ बैड प्रोडक्ट. एनीथिंग, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट. So that is one product I have got. Next one I got, this was also MAC का नया लॉन्च था. MAC मैक्सिमाइज्ड लिपस्टिक. इट्स देयर OG लिपस्टिक जो है ना, मैट लिपस्टिक, उसका ही थोड़ा सा अपडेटेड और अपग्रेडेड वर्जन है. एंड आई हैव यूज्ड MAC का लिपस्टिक एंड मेहर इज माई फेवरेट वन, बट दिस टाइम आई गॉट दिस वन. दिस शेड, दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्राउन न्यूड टोन. इसका जो शेड नेम है वो है 616 टॉप. एंड दिस इज हाउ, कहाँ पे दिखाओ, दिस इज हाउ इट लुक्स. आई डोंट नो, इधर दिखाती हूँ, रुको. इट्स अ वेरी प्रिटी कलर. अरे दिख रहा है क्या? हाँ, दिस इज हाउ इट लुक्स. इट एग्जैक्टली मैचेस माई टॉप टुडे. बहुत सुंदर कलर है. कोई भी लगाएगा बहुत अच्छा दिखता है ये. आई मीन फेयर, डस्की, डार्क, whatever the complexion you have, depending upon you may need to use a lip liner as well, in case if you want. I would suggest you to use it with a lip liner. That will give you the more enhanced or elevated look. But it's such a beautiful color, nude shade, and everyday basis के लिए तो बहुत ही अच्छा है. इसमें ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है because it's their OG launch. इसका सिर्फ पैकेजिंग वगैरह थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है, that's all. And next one I got this one. This is from Fay Beauty. इसका जो ढक्कन है पता नहीं कहाँ निकल गया है. I have been using it and I have to be honest about this lipstick. This lasts longer. I mean बहुत ही ज्यादा टाइम तक ये रहता है. I think whole day ऑफिस में मैं लगा के रखती हूँ तो whole day लगा रहता है. And your lips will not feel dry at all. Okay. Like I don't know what formula it is. It's quite lightweight. It gives that pigment as well, and it lasts such a long time. I mean, I really love this lipstick, and trust me, that's why I have been using it. ये निकल के चला गया कहाँ पे. And such a beautiful color. I don't remember the shade name. I think it's Wet. The shade name is Wet. I'll show you the color payoff. जगह नहीं बचा मेरे हाथ में, बट फिर भी दिखा देती हूँ यहाँ पे. दिस इज द शेड. इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गेट 1 or 2 more shades because of the formula. I love the formula. This is the first time I got this product from Fay Beauty, but I really love the formula of this lipstick. Next one, I got this one lip balm from Swiss Beauty. It's their Kiss Candy Lip Balm with olive oil, and इसका जो fragrance है वो coffee bean वाला fragrance है. It's really nice. I mean, I really love to use it. Like ऐसे कॉफी कलर में आता है तो थोड़ा सा ब्राउनिश ऐसे दिखता है. जस्ट अनदर लिप बाम. ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें. आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट बिकॉज आई नेवर ट्राइड देयर लिप बाम बिफोर, सो दैट्स द रीजन. इसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएशंस में मिल जाएगा. आई मीन शेड वाइज और आई थिंक फ्रेग्रेंस वाइज ऑल्सो. I never used coffee bean wala fragrance, so that's the reason I got it. Next two lipsticks are also from Swiss Beauty. It was their new launch. These two lipsticks, Swiss Beauty My Shine lipstick. I am in the shade 03 Pink Victoria, and another one is 01 Bitter Nude.
बहुत ही सुंदर कलर है दोनों, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, इट्स जस्ट लिप ग्लॉस प्लस लिपस्टिक यू कैन से। और इसका जो एप्लीकेशन है ऐसे इसको पुश करना पड़ता है एंड देन यू गेट द लिपस्टिक एंड दिस इज द शेड, दिस इज द बिटर न्यूड and the other one is pink Victoria one is this one. Both are pretty shade. This is a pink Victoria and this is the bitter nude. Everyday use के लिए best है, but don't expect कि ये बहुत टाइम तक रहेगा, आपको reapply करना पड़ेगा if you are eating or drinking anything. Okay, so that's about all the lipsticks and lip gloss, lip balm, whatever I have got. Most of the lipsticks I have already reviewed it, so if you want to know detailed review, please scroll down so you will get to see all the shots. If you want to check, please feel free to do that. Now let's move on to other products. Let's move on to blush and concealers or tint, I would say. Okay. Next is this blush. Both of this blush are from Inside Cosmetics. This one, I think this one is the new launch. और ये blush नहीं है, creamy lip and cheek tint है. इसका जो shade name है वो है 01 Rose Parade and ये है एक blush. This is not a new, I don't remember actually ये वाला new launch था कि ये वाला new launch था. You can check this out on Nykaa and this is how this looks. ये बहुत ही प्रिटी सा कलर है, एकदम सनकिस्ट वाला लुक देता है, पीची कॉरली शेड है बट बहुत ही ज्यादा लाइट और माइल्ड शेड है इसका। पिगमेंट बहुत अच्छा है इसका एंड इसका जो शेड नेम है वो है 02 न्यूड प्ले। इसका नाम है ऑन द गो ब्लश स्टिक। दिस इज द शेड। How would I put it in words? Like it's a very pretty peach color and fair to medium tone में ज्यादा अच्छा दिखेगा rather than dusky complexion. But they have different other shades available, so you can definitely check this out. Pigment तो बहुत अच्छा है, 10 out of 10 and इसका जो फॉर्मूला है, जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा है. You can build it up as well. Okay, so this is the second one. Third one is this one. This one I recently got it from Tipsy Beauty. I heard a lot about this product कि ये Charlotte Tilbury का dupe है, almost same है. Product का quality भी बहुत अच्छा है, perform भी बहुत अच्छा करता है. So I had to get my hands on this one. Tipsy Beauty Silk Cushion Blush Matte. I'm in the shade Bouquet of Roses and trust me, it really worth the hype. Okay. आपको सिर्फ एक डॉट चाहिए होता है एंड इट्स सो पिगमेंटेड, अमेजिंग कलर पे ऑफ. मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स. इट्स अ वेरी प्रिटी पिंक मॉवी टोन का शेड है. इसमें शायद एक और शेड अवेलेबल है, 2 ही शेड इसका अवेलेबल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एंड ये आपको ब्लेंड करोगे ना, सी हाउ ब्यूटिफुली इट्स गेटिंग ब्लेंडेड. बहुत सुंदर कलर है एंड कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है. काफी टाइम तक चला जाएगा ये. यू जस्ट नीड अ ड्रॉप एंड देन यू कैन जस्ट smudge it or blend it properly. You will get absolutely, and इसके अंदर एक अलग से एक शाइन आता है. आई थिंक ये यूज करने के बाद आपको अगर एवरीडे बेसिस पे अगर आप यूज कर रहे हो तो हाईलाइट की जरूरत नहीं है उतना ज्यादा. इट वर्क्स ब्यूटिफुली. ओके, सो इफ यू वांट टू चेक दिस प्रोडक्ट आउट, I would highly recommend you to try this one. Okay, let's quickly move on to the brow product. And oh, okay, one lip liner was also there. I got this lip liner from Swiss Beauty. Oh my god, this lip liner, it's so inexpensive, so pigmented, and it works like you can use it in dual way. Also it's called 2-in-1 lip liner and lip filler. So it works as a lip liner and you can also fill your lips. And the color payoff, oh my god. I also got one more lip liner from the same range. Let me show you the color. Okay, this is a burgundy color. I really wanted to have a darker shade. Look at the pigment. It's so smooth. I think 190 rupees इसका price है. I would highly recommend you to try this lip liner or lip filler, whatever you say. बहुत सारे others
लग्जरियस जो ब्रांड है ना, आई मीन प्रीमियम क्वालिटी के ब्रांड के आगे भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा. आई एम टेलिंग यू, लाइक इट्स सो स्मूथ. लाइक एक ऐसा करो, सी how pigmented this one. I love this lip liner. I mean, most of the lip liners, I mean, most of the shades were out of stock, so I get this shade burgundy. I wanted to have a one darker shade. I normally go for nude one. Next, I want to talk about this eyebrow product. I got my hands on this NYX ka eyebrow product. NYX Professional Thick It Stick It Eyebrow Thickening Brow Mascara. ये मस्करा जैसे इसका एप्लीकेटर है, बट आई एम नॉट दैट अ ग्रेट फैन ऑफ दिस काइंड ऑफ एप्लीकेटर. थोड़ा सा अगर पतला होता ना तो बहुत अच्छा लगता. आई मीन इट परफॉर्म्स रियली वेल, आई वोंट से दैट. मतलब काफी अच्छा पिगमेंट भी है, सब कुछ है, बट मुझे पता नहीं इसका एप्लीकेटर उतना ज्यादा पसंद नहीं है. इससे बेटर मुझे मेबलिन वाला लगता है, जो मेबलिन टैटू आईब्राउ मस्कारा जेल आता है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है. I heard a lot about it, that's why I got it. It works absolutely fine. I personally just have a little bit of problem with the applicator. Other than that, product is amazing, performs really well. You can definitely check this item out as well. Next, another one, a brow product from NYX. This works absolutely amazing. This is the, ये बहुत पुराना product है. I mean, I used to use it. Recently, I was scrolling through and then again, I got it. Okay, NYX Professional Micro Brow Pencil, Crayon Micro Pencil, that's what it's mentioned. इसमें बहुत सारे शेड्स भी अवेलेबल है. मैंने जो लिया है वो है एस्प्रेसो. ऐसा इसका ब्राउ का प्रोडक्ट है, बहुत ही लाइट है यहाँ पे, एंड काफी अच्छे से ये ब्राउ को डिफाइन भी करता है. आई रियली लव दिस ब्राउ प्रोडक्ट. सो दिस इज ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट की तरह काम करता है. ऑलमोस्ट, आई विल नॉट से लाइक कंप्लीटली, बट बेनिफिट का भी मैंने पहले यूज किया हुआ है. बेनिफिट तो अलग ही है, बट अगर आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस वन. ओके, इफ यू आर अ ब्राउ पर्सन, इफ यू लाइक टू डिफाइन योर ब्राउ एंड ऑल दैट, ओके, इफ यू आर ओके विथ योर ब्राउ, then you can skip this product. So let's move on to one more makeup product, which is this primer. This is, I think, my second or third tub. This is a primer from Brenny Cosmetics. I love this primer. एक अलग ही एक कलर है इसमें, एंड थोड़ा सा ही चाहिए होता है, एंड सच में ये पूरा स्किन को ना ब्लर आउट कर देता है. This video is not sponsored by any of the brands, not even by Nykaa. I really love this primer. It's quite affordable as well, like 200-300 के अंदर आता है. पूरा इतना बड़ा टब आपको मिलता है, एंड काफी दिन तक चल जाता है इसका. So this is one product. This is a primer which is absolutely necessary before applying your makeup. If you don't use primer, please start using primer. It gives a different finish. Just a suggestion, I would say. You can definitely try this out. So next product is this one. This is a setting spray. ये मेरा 4th या 5th model है. I love this setting spray. This is also from NYX. इसका एक और आता है, मतलब और वेरिएशंस आता है. इफ यू आर ऑयल स्किन पर्सन, यू कैन ट्राई दैट वन. आई एम ड्राई स्किन, सो आई यूज द ड्यूई वन. So this is their ड्यूई फिनिश 16 आवर लॉन्ग सेटिंग स्प्रे. थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉटल काश थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा लगता. इसमें आपको ना 60 ml का ही प्रोडक्ट मिलता है. आई लव दिस सेटिंग स्प्रे. अगर मैक के बाद मुझे कोई सेटिंग स्प्रे अच्छा लगा तो ये वाला है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी बॉटल्स में इसके यूज कर चुकी हूँ. इसका जो प्राइस है ना, अराउंड 700-800 के आसपास आता है. इसका मैट वाला भी आता है, तो वो भी आप ले सकते हो, बट इट वर्क्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. पूरे फेस को ना एक अलग सा ग्लोई लुक देता है, विच आई लव अबाउट दिस वन. Last couple of products. These products are perfume actually. Basically, I never knew that Titan का भी एक परफ्यूम आता है. I saw one shorts on YouTube where they are discussing about that Titan, the watch brand. Okay, they have their own perfume brand, and that day I realized, oh my god, really? I have to try it. So I got these two perfumes. These are the new one. I have not used it. I have not reviewed it yet. ये है, एक है raw. Sorry, this one is a raw
जो परफ्यूम का ब्रांड का नाम है ना टाइटन का, उसका नाम है स्किन बाय टाइटन रॉ EDP परफ्यूम है। और सेम ही ये भी स्किन प्रिस्टीन, एक है मेल और एक है फीमेल। ओके, दोनों का बॉटल भी सेम है। सो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई द मिनी साइज। इफ आई लाइक इट देन आई मे गो फॉर द बिगर वन। एग्जैक्टली सेम बॉटल दिखता है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। मुझे दोनों ही ट्राई करना था, तो मुझे ये रॉ वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका जो फ्रेग्रेंस है, हो इसका भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। I will definitely review these two perfume. I'm so excited to actually try these two perfumes as well. It costed me around 500 or 600 each. And yeah, wait for my review about these two products. Next perfume which I got is a new launch. I think new launch as like couple of months हो गया है इसको launch होते हुए, but I just had to get it because I love the bottle. Okay, I saw so many shots also on this particular perfume. This is from Lancome. This is their Idol EDP perfume and ये जो size है, I think ये 25 और 30 ml का product है। इसमें और भी sizes available है। So इसका जो note है ना, मुझे बहुत पसंद आया इसका note। Oh, heaven. I have not used it, I just got it. I'll start using it. We just quickly read it out, the notes, what it has. The top notes are lychee fruit and freesia. Heart notes are magnolia, ginger, pepper. And base notes are jasmine, musk and amber. जो फ्रेग्रेंस का फैमिली है वो थोड़ा सा फ्लोरल टाइप का है, बट इट्स नॉट ओवरपावरिंग और इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. But I am not that fan of floral fragrance, to be honest. But I loved this fragrance. I don't know how come. I mean normally perfume जब भी मैं खरीदती हूँ, पहले मैं physical shop में जाकर स्टोर में जाकर चेक करती हूँ. Then if I am aware of that fragrance, then I order it online. Other than that, I like to purchase perfume by going to a store. Okay, if I'm not too sure, I don't want to invest my money to a luxurious or premium brand. So that's how I purchase. But this one, मैंने एक ऐसे ही तुक्का मार दिया, like let's see, like there are so many people are talking about it and all that, and you really need to get your hands on this one. I know it's little expensive. I will suggest get the smallest one only. And इसीलिए मैंने छोटा वाला लिया था ताकि मैं पहले ट्राई करूँ, अगर मुझे पसंद आता then I can go for the bigger one. पहले मैं बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ परफ्यूम में, like unless I am aware of that fragrance completely. It really doesn't make sense to me. This particular floral fragrance, oh my god, I loved it. It's not that sweet. I'm not that fond of sweet perfume. Like कभी कभार के लिए ठीक है. So I avoid using lot of vanilla perfume or body mist. I love to wear oud वाला जो perfume होता है और woody वाला जो fragrance होता है. I prefer that. But this has a little bit of spicy finish with the floral fragrance, so it's quite soothing for my brain. And if I close my eyes, oh my god, I can see myself, like it has some different fragrance, man. I don't know what is it, but it's not sweet. I would highly recommend you, if you are a perfume girl or if you like to explore, you should get your hands on this one. You will not regret investing your money, to be honest. And with that, we have come to an end of this video, and that is all I have got from Nykaa in last 2 months. I hope you really liked and enjoyed this video. If you like the video, don't forget to hit the like, share and subscribe button. That would mean a lot to me. And also don't forget to turn on the bell icon, so whenever I'll be uploading a video, you'll get notified and you will not miss any of my videos. If you have any video suggestions or if you want me to review any particular products from different apps or websites, please do comment down below. I will try my level best to incorporate that in my upcoming videos. If you like my videos and content, I'm super active on Instagram, so please do give me a follow there as well. And with that, I will see you in my next video. Till then, take care and stay safe.